theorem 10.11 of circle chapter is the sum of pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. So the question is, what is cyclic quadrilateral? A quadrilateral is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle, then it is called cyclic quadrilateral. Like this, it is a circle and it is a quadrilateral, this one, and the all four vertices, that is A, B, C, D. In quadrilaterals there are four vertices and A, B, C, D are the four vertices of this quadrilateral. Okay, and these four vertices lie on the circumference of circle. So this type of quadrilateral is called cyclic quadrilateral. So in this theorem we have to prove that the sum of opposite angles, that is angle A plus angle C equals to 180 degree and angle B plus angle D equals to 180 degree. This is the important property of cyclic quadrilateral. With the help of this theorem we solve our exercise. Okay, now we are going to prove our theorem. So here I draw a quadrilateral A, B, C, D. All four vertices lie on the circumference of the circle. Therefore, it is a cyclic quadrilateral. Okay. Now the given part is a cyclic quadrilateral A, B, C, D. To prove angle A plus angle C, that is the sum of pair of opposite angles is 180 degree. So angle A and angle C are opposite to each other and angle B and angle D are opposite to each other. So we have to prove that angle A plus angle C is 180 and angle B plus angle D is 180 degree. So for proving this theorem, I just join the diagonals, that is BD and AC. And for our convenience, I naming the angles: angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6 and angle 7 and angle 8. Now we apply our another theorem, that is angles in the same segment of a circle are equal. Okay, so अगर हम इस सेगमेंट को देखें DC से जो सेगमेंट बना है, अब देखो इससे एंगल 3 एंड इसी सेगमेंट DC से आप ये देख सकते हो कि बेस DC किस एंगल का बेस है. ओके, सो DC एंगल 3 भी फॉर्म कर रहा है और एंगल 6 भी, एंड दे आर इन सेम सेगमेंट. ओके, ये ऊपर वाले सेगमेंट में है तो ये इक्वल होंगे, सिंस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, because angles in same segment DC. Now similarly angle 5, देखो ये किस सेगमेंट से बना है? BC से. एंगल 5 और इसी BC से एंगल 8 भी फॉर्म हुआ है. आप बेस देखो और उससे चेक करो ये बेस कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, दैट इज एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8. सेम रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बाय BC. ओके, नाउ AB सेगमेंट से कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है? एंगल 2 एंड एंगल 7. So angle 7 equals to angle 2, angles in the same segment AB. Now similarly, अब ये सेगमेंट बचा AD, तो इससे चेक करते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल्स इन द रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट AD. Because we know that the angles in the same segment of a circle are
equal. So with the help of these 4 equations, we prove our theorem. Now another property of quadrilateral. The sum of all angles in quadrilateral is 360 degree. That is, since angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360. Sum of angles of quadrilateral is 360. Okay. Now angle A किस एंगल से बना है? एंगल 5 एंगल 6 से. सो वी कैन राइट in place of angle A we can write angle 5 plus angle 6. Similarly angle B is made up of angle 4 and angle 3. So it is angle 4 plus angle 3. Now angle C is angle 1 plus angle 2. So angle 1 plus angle 2 because ये split हुए हैं. ठीक है, diagonal के कारण. Plus angle D is angle 7 plus angle 8. So the sum is 360 degree. अब हमें क्या अपोजिट एंगल, चलो हम एंगल ए और सी को पहले प्रूव करते हैं. ठीक है, तो एंगल ए और सी है कि कौन कौन से एंगल से? 1 2 5 6. तो हम एंगल 1 और 5 की को वैसे ही रहने देंगे और उनके इस जगह पे हम इन एंगल्स का यूज करेंगे. ओके, सो एंगल 5 तो सेम है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये दोनों. इन प्लेस ऑफ एंगल 4 वी कैन राइट एंगल 1. इन प्लेस ऑफ एंगल 3 वी कैन राइट एंगल 6. ओके, नाउ एंगल 1 और एंगल 2 हमें चाहिए, तो हमें एज इट इज लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2. नाउ इन प्लेस ऑफ एंगल 7 वी कैन राइट एंगल 2 because they are equal. So in place of angle 7 I write angle 2. Now in place of angle 8 we write angle 5. So the sum is again 360. Now angle 5 2 times, angle 6 2 times, angle 1 2 times, and angle 2 is again 2 times. So I can write 2 angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6. The sum is 360 degree. Or angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6 equals to 180 degree. 360 divided by that is 180 degree. Now you can see that what is angle 1 plus angle 2? Angle C. So in place of angle 1 and angle 2 we can write angle C. And in place of angle 5 and 6 we write angle A. Okay, ये एक साथ है. So the sum is 180 degree. और यही हमें प्रूव करना था. The sum of pair of opposite angles is 180 degree. So it is our first part of this theorem. So this is our equation. चलो मैं इसको first नेम डाल रही हूँ, equation 1 and equation 2. Now from equation 1, since angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 5 plus angle 6 equals to 180 degree. इसके बाद सॉल्व करेंगे हम. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1? Angle 1 equals to angle 4. So in place of angle 1 we can write angle 4 plus in place of angle 2 we can write angle 7 plus angle 5. In place of angle 5 we can write angle 8, and in place of angle 6 we can write angle 3. The sum is 180 degree. Now angle 4 and angle 3 हम इनको साथ लिखते हैं, angle 4 plus angle 3 and angle 7 plus angle 8 equals to 180 degree. Now what is angle 4 and angle 3? The sum of angle 4 and angle 3 is angle B. You can check here, angle 4 plus angle 3 is angle B, and angle 7 plus angle 8 is angle D. So here I can write angle B plus angle D equals to 180 degree. It is our second part of this theorem. So we proved it that the sum of pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree.